Just a minute. Okay, please check. Is it's visible now or not? Yes, it will. Okay, so we will be studying now second order circuits. It's actually extension of what we have studied for first order circuits. Like in this case, we have a capacitor, we have an inductor, and we will have resistance, and of course there will be sources. Like in case of first order circuits, we were dealing with a first order differential equation, right? But now we will be concerned with the second order differential equation. So that will be the actual difference. First order, you are working with first order differential equation. Now you will be working with second order differential equation. So if you recall, for first order circuits, how many initial conditions we used? How many initial conditions were required for solving a first order that circuit? Utsav, सर इनिशियल कंडीशन मतलब इनिशियल पे तो मतलब कुछ भी हो सकता था ना. हाँ तो हाउ मेनी, कुछ वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बट हाउ मेनी? आई एम आस्किंग नंबर. यस रोहित, इट्स वन. फॉर फर्स्ट ऑर्डर इनपुट इट्स की वन. बात कर रहे हो क्या सर? यार आई एम जस्ट आस्किंग हाउ मेनी इनिशियल कंडीशंस were required for solving a first order circuit. So it's one, right? If you remember, we said no, V0 equal to this or I0 equal to this. Yes, Do you sir. remember that? So same Yes, thing, I'm sir. asking how many. I'm not अच्छा. asking that what is the value. I'm asking how many. Okay. So now in case of second order circuits, can you tell me, Utsav, now how many initial conditions will be required? सर 2 होनी चाहिए. Two honi chahiye. Two hi hongi. Okay. So we will be now requiring two initial conditions. So that's the one of the major difference between first order circuits and second order circuits. That in case of first order circuits, you required only first on one initial condition, but now for a second order circuit, you will be requiring two initial conditions. Okay. And so in this case, we will have basically two energy storage elements, inductors and capacitors. That's the main difference. For first order circuit, you are having only a single energy storing element, but now you have two energy storing elements, and you will have a second order differential equation. Like I have given a sample. This is a form of a second order differential equation which you will be concerned with. So you can see that second order differential equation, d square x by dt square, a1, a0, these are constants, and ft is some input that we will be applying. Okay, ft is some function. It's an input that we'll be applying. It may be a step input, this may be ramp input, this may be a sinusoidal input. Okay, and as I told you that you will be requiring two initial conditions. So this is what it means: x0 and x prime 0. X prime is differentiation, x dot 0 basically. You can write it prime or 0. And mainly we will be dealing with the series RLC circuit, parallel RLC circuit, but your second order systems can be of different types. Okay, they need not to be just series or parallel. I will show you later on that they can take different forms. Okay, it's not always that they will be always in this possible configuration only. They can be series, parallel, or combination of like different configurations. Okay, now in case of second order circuits, we'll be concerned with first these main topics. First, we will see that what is that order differential equation.
we will be seeing that forced and homogeneous solution. Forced and homogeneous solution are same like what we discussed, particular solution and homogeneous solution. So it's the same thing we had seen in case of first order circuits. Do you remember that particular solution and that complementary solution and particular solution? Then we found that complete response. YP and YH, homogeneous equation solution and particular solution. याद है फर्स्ट ऑर्डर में हमने किया था. कांस्टेंट इनपुट अगर हो तो हमारा होमोजेनियस फंक्शन हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन किस फॉर्म का होता था फॉर अ कांस्टेंट इनपुट? पढ़ा नहीं है आप लोगों ने. मैंने बोला भी था कि लाइक यू शुड गो थ्रू द डिफरेंशियल इक्वेशंस वंस. So all these are concepts from differential equation, not from circuit theory. So like these are not circuit theory things. These are from differential equations. If you know differential equation, you will be very comfortable with these topics. Okay, but these things will again be coming in this unit. So even if you have not seen, please pay attention and see it here again. And the third important concept that we'll be learning here in this second order circuits will be the idea of natural frequency and damping ratio. Okay, these two are very important terms. So natural frequency and damping ratio. Like this is one example of a second order circuits. The second order circuit, RLC circuit. We have resistor, capacitor, and inductor. So this is just a series RLC circuit. But as I told you, there are many possible configurations. Like it may be connected in parallel, or you may have this as second order circuit, or this as the second order circuit. So they can take different forms. You must remember this. They are not always series or parallel RLC. Okay. The only thing is you should have two distinct energy storage elements. And of course, there will be a resistor which may be present. Okay. Fine. So now let's start with the governing differential equation. So let's consider this series RLC circuit only. So we have R, we have L and C, and I have given this source voltage is Vs, and this voltage across resistor VR, voltage across capacitor VC, and voltage across this inductor is VL. So we can write KCL. KCL will give us this, or sorry, KVL. From KVL we can write like this. Okay, from KVL you can write Vs equal to VR plus VC plus VL, and you can now express this VR, VC, VL individually. So that will give you this equation. Okay. And if I differentiate it further, like if I differentiate this first equation, then what will I get? I get this second equation. Yes, you will have to solve this second order equations, but I'll be teaching you what are the solutions. Those things we will be we'll be studying. So don't worry, you don't need any extra knowledge. Basic minimum. So we are not like working too much, going into too much detail of second order differential. It's the minimum, basic minimum thing, and all those things I'll be teaching you. Don't worry about those things, even if you haven't studied. But thing is that at least जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ लो. Like particular solution, homogeneous solution. अगर आपको, if you are not able to recall from first order circuits, then what is the point? So ये मत कहिए कि like second order you will be studying later on. But whatever I am teaching, at least those things you must learn. Okay, so fine. I hope all of you agree that if I differentiate this first equation, I'll get this second equation. Yes, sir. Okay, so we have this. Now you can see that this is a second order differential equation. ठीक है ना? Yes, so sir. this is a second order differential equation, and like similarly you can write for other, like for parallel RLC circuit, we can have this equation. Like we have done it for the series RLC circuit. For a parallel RLC circuit, I have shown you we can apply KCL, and you can then write this equation in terms of voltage, this equation. Okay, so this is for a parallel RLC circuit. Similarly, we have equation for series RLC circuit. So these are the main two configurations that we'll be concerned with. So that's why I am just focusing on this series and parallel configuration. Okay, is it clear? Yes, sir. So we have this
RLC circuit, and this is our like differential equation. We have this differentiation, means we obtain this second order differential equation, and what we have now is we have this differential equation. Now, whatever equation form you take, whether you consider this parallel RLC or you take this series RLC, okay? Whether you consider this parallel RLC or series RLC, this series RLC circuit, this second order differential equations, whatever form you have, whatever configuration of this circuit you have, all of them can be expressed like this in general. Okay. Now, don't worry, these are new parameters that we are introducing, this zeta and this omega naught, and these are parameters that I'll be explaining. And but otherwise, any second order differential equation we can express in this form. Can you see this? That this can, like first order, this first case, you see this, we can express it in this form. Okay. Similarly, this second, we can express in this form. Okay, so like this is the general form. Now I told you that we'll be concerned with the second order differential equation, so we'll be concerned basically with the differential equation of this form. So आपको बस इसको समझना है, इसके सॉल्यूशन को समझना है. ओके, जो हम करेंगे अभी स्टडी, आपको बस इस सॉल्यूशन को समझना है, else no issue. So don't worry, अगर आपको नहीं भी पता, if you understand the solution of this equation, आपका इस कोर्स के लिए तो काम हो जाएगा. Okay, so what are the zeta and omega naught? As I told you, we'll be like discussing these details, but you note down this form. ठीक है? This I is not necessary that I will be always voltage, this current. I is like some things, it's a general form. You can write it X or you can write it V also here. Okay, so you may write X where X can be I or V. समझ में आया? Any doubt up to this point कि क्या कैसे ये इक्वेशन कैसे आ गई? यस सर, ये लास्ट बताया, फिर से बता दो सर. तो हमने अभी हमने दो फॉर्म देखे, एक पैरेलल देखा, एक हमने सीरीज देखा. हमने देखा पैरेलल में हमारा ये फॉर्म आ जाता है और इक्वेशन का, सीरीज में हमारा ये फॉर्म आ रहा है. ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया? यस सर. अब हमें क्या करना है? अब अगर हमें इस सर्किट को एनालाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अगर मान लो सपोज पैरेलल को मुझे करना है तो मुझे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है ना? यस सर. और अगर सीरीज को करना है तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो हम ये कह रहे हैं कि हम हर एक सिस्टम को इंडिविजुअली ना सॉल्व करके, हर एक सिस्टम के लिए अलग से इंडिविजुअली पहले इसको सॉल्व करें, अगर इसको कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करें, अगर इसको कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करें. नहीं, हम कहते हैं हम एक जनरल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करते हैं जिसमें कि ये सारे केस आ जाएंगे, दोनों केस आ जाएंगे. ठीक है, एंड दैट जनरल फॉर्म वी आर सेइंग इट इज दिस. ओके, समझ में आया? Yes. So we'll be concerned with this form. If we are able to solve this general form, we can solve either parallel RLC or series RLC. All the forms we can solve easily. Okay. So this is what it means. Ki you have to focus only on this equation. If you are able to solve this equation, you can solve either of the means this previous case, either this series RLC, parallel RLC, these different cases. So that's why we will be studying the solution of this. Okay, so let's see that how to solve this equation. We'll be now concerned with the solution of this, and that we will again do with the help of our knowledge of that forced and homogeneous solution. So we will be seeing each of these solution individually. आपको फर्स्ट ऑर्डर में याद है ना जो हमने किया था? फर्स्ट ऑर्डर में कुछ तो याद होगा, होमोजेनियस और पर्टिकुलर जब हम लिखते थे, या दोबारा आई शुड शो? एक मिनट, आई विल शो इट अगेन. सर एक्चुअली सर उस दिन मैं थोड़ा सा कहते हैं लेट ज्वाइन होता है, पता नहीं वो मैं एब्सेंट था. आपके नहीं बोल रहा हूँ, सब फॉर अदर स्टूडेंट्स आल्सो. जो एब्सेंट है वो तो चलो दे कैन चेक अगेन लेटर ऑन, बट दोज हु आर प्रेजेंट उनको याद है या नहीं है? यस सर, याद है. याद है ना? सो इट्स द सेम कांसेप्ट. सो लेट्स सी, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन. पर्टिकुलर हमने देखा था कि इट्स if your input is constant, your IP was also constant. Okay,
Whereas if input is sinusoidal, then output will also be sinusoidal. Means the particular solution, not output, particular solution will also be sinusoidal. And in general, particular solution IP is this weighted sum of ft and its first and second derivative. What is ft? ft is this function जो हमारा input है. समझ में आ गई है? How to find this IP particular solution? Yes or no? नहीं सर. नहीं आया. देखो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है? ओके सर. इसके लिए क्या है, हमें दो सॉल्यूशन निकालने हैं. एक तो ये फोर्स्ड, ठीक है, एंड सेकंड दिस होमोजेनियस. ओके, सो हमें दो सॉल्यूशन निकालने हैं. उनका हमें क्या करेंगे वो हम बाद में देखेंगे अभी, बट हमें उसको सॉल्व करने के लिए वी नीड दीस टू सॉल्यूशन. सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मींस दिस फोर्थ सॉल्यूशन ओनली. ओके, पर्टिकुलर मींस Okay. दिस फोर्थ. This is particular solution. So particular solution क्या होता है? Particular solution will actually depend on what is this ft. वो ft पे डिपेंड करेगा. ओके ओके, सो वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा ft. ft डिसाइड करेगा कि आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा. सो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ft आपका कांस्टेंट है ना, सपोज ft कांस्टेंट हो सकता है ना, यू में Yes, अप्लाई sir. कांस्टेंट, यस. तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो भी कांस्टेंट होगा. ओके, दैट्स द ओके फर्स्ट. सर. फिर सेकंड हम ये कह रहे हैं, अब अगर सपोज कांस्टेंट नहीं है, मान लो सपोज वो साइनसॉइडल है, तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो भी साइनसॉइडल होगा. क्लियर? तो फिर जीरो के केस में वो आउटपुट भी जीरो होगा सॉल्यूशन. जीरो मींस इफ ft इज जीरो, यस सर. ft जीरो आएगा. अभी उस पे हम आ रहे हैं, वो सेकंड बात है. अभी हम नॉन जीरो मान रहे हैं, ft इज नॉन जीरो. ठीक है, ओके सर. ये कुछ भी ft आपने इनपुट अप्लाई किया, और अगर ft मान लो इन जनरल ft है ना, मान लो कोई जरूरी नहीं है ना कि वो हमेशा कांस्टेंट या साइन ही होगा. यस ठीक सर. है ना, इट कैन बी एनीथिंग. सो हम कह रहे हैं तब हमारा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा? दैट विल बी सम ऑफ दिस ft प्लस इट्स फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स. यही मैंने यहाँ लिखा है. ठीक है, ओके अब आप सर. देख सकते हैं, इफ ft इज कांस्टेंट then particular solution is constant. If ft is sinusoidal, then particular solution is sinusoidal. If in general your particular solution will be weighted sum of this ft and first and second derivatives. अब किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझसे इसमें. अनिकेत, अनिकेत. सर हाँ सत्यजीत बोलिए. सर वो प्रीवियस वाला इक्वेशन लिखेंगे एक बार. प्रीवियस, अच्छा एक मिनट. मतलब This one, this. यस सर. सर यहाँ पे आप i की जगह ना x लिख सकते हैं, because it's don't confuse this with current. Okay, this is not current. It can be voltage also. Here I am writing na every voltage and current. यस सर. सर हम लोग अगर इसको अगर ft को फिक्स वैल्यू ले रहे हैं तब वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, ये बोल रहे हैं ना आप? ft can be any input. Input तो आपको Yes, अप्लाई sir. करना है ना. यस It can be constant also. हाँ मतलब ठीक है. अगर हम लोग ft को ही एनालाइज करेंगे तभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा, ये बोल रहे Yes, ft आपको पता होना चाहिए. ft आपको पता होना चाहिए. You should know what is ft. हैं. तो फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मीनिंग आप क्या बोलना चाहते हैं? ये नहीं समझ आया. Particular solution मतलब वैसे तो ये you will be studying इसका जो पूरा डिटेल वो differential equation mathematics में आप पढ़ेंगे. But that means we are saying that it is particular for this type of ft only. मींस यहाँ पे इसका मतलब वो इनपुट के लिए या पर्टिकुलर है सॉल्यूशन? हाँ, वो इनपुट, वो उसी इनपुट टाइप के लिए जो आप इनपुट ले रहे हो. ओके सर. ठीक है, जैसे मान लो सपोज अगर आपका ft कांस्टेंट है, ठीक है, सपोज ft इज कांस्टेंट, तो योर दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल नॉट बी साइनसॉइडल ना. यस सर. ओके, इट विल आल्सो बी कांस्टेंट. सो ये जो है ip क्या, ये इसके लिए हो गया ना, इस ft के लिए, कांस्टेंट ft के लिए, particularly for this ft. Similarly this is particularly for this ft. Okay, is that clear? यस. Okay, so now talk about this homogeneous solution. So particular solution तो समझ में आ गया, वो जो input given होगा उससे हम निकाल लेंगे. ठीक है ना. अब we will talk about homogeneous case. So homogeneous solution or also known as this complementary solution. Complementary solution actually is of this form, k exponential st. Okay, now what is k, what is s, that we will discuss. K is a constant that we will find using this
our initial condition. Okay, this complementary solution or that solution of homogeneous equation is of this form k exponential st. जो k होगा वो हम initial condition से निकालेंगे और s क्या होता है? S is coming from the coefficients of the differential equation. Coefficients क्या है यहाँ पे? जैसे this zeta omega naught that will decide s. Okay, you just write down this form. I can understand कि आपको ये थोड़ा भी difficult लग रहा होगा grasp करने में, like digest करने में आपको difficult थोड़ा लग रहा होगा कि क्या ये k क्या s है. You just write down these formulas like k, e, s, t, and similarly this equation. You will be, don't worry, you will understand everything. So we have found IP. I can assure you, you will understand. By the end of this lecture, you will understand. That means by the end of this second order unit circuits. So what is IP? IP is our particular solution. Then next we are going for complementary solution, that is IC. IC is of this form. Okay, K E S T, and K क्या है? K constant है जो कि हमें initial condition से निकालना है. S क्या है? S is this something which we will find using coefficients of the differential equation. Okay, how we will find what is K, कैसे आएगा वो निकल के? You will be getting all the details. ठीक है, so don't worry, just wait for a few minutes. So complementary solution क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लाइक आईसी है, वो पता है किसका सॉल्यूशन होगा? वो इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा विद राइट हैंड साइड इक्वल टू 0. ओके, अगर हम ft को 0 देना तो जो सॉल्यूशन आएगा ना, एक्चुअली हम उसको ही बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और होमोजेनियस सॉल्यूशन. इज दैट क्लियर? यस सर. तो हमें दो सॉल्यूशन निकालने हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन. पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो होगा कि जो कि हम ft को देख के बताएंगे कि क्या होगा सॉल्यूशन. कोई भी अगर गिवन इक्वेशन है इस टाइप की सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होगी, यू विल सी ft, दैट व्हाट इज ft, एंड बेस्ड ऑन दैट ft यू विल डिसाइड योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ओके, दैट इज फाइनल IP, दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन वी हैव फाउंड. सेकंड कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड इज कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन. कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या होता है? वो होता है कि सेम डिफरेंशियल इक्वेशन होगी बट ft 0 होगा. सो वी फाइंड दैट कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन IC, और हम कह रहे हैं वो IC विल बी ऑफ दिस फॉर्म KEST. ओके, नाउ इफ IC इज a solution, we are saying that IC is a solution of this homogeneous differential equation. Homogeneous means when ft is 0. So that means that IC should satisfy this differential equation with ft equal to 0. अगर solution है homogeneous differential equation का, so that solution should satisfy this equation, differential equation when ft equal to 0. So that is what we will do. I'm putting IC there in the differential equation and I get this. Okay, जहां जहां वो I था मैंने IC रख दिया और IC को KEST रख दिया, KEST, and finally this leads to us to this differential equation, s square plus 2 zeta omega 0s plus omega naught square equal to 0. समझ में आया क्या किया हमने? किसी को कुछ भी डाउट है बेटा, प्लीज आस्क मी. एवरीवन शुड बी क्लियर. वी कैन लाइक डिवोट टाइम, दैट्स नॉट अ इशू, बट यू शुड अंडरस्टैंड. So we are getting one equation, s square plus this is very important equation. You will understand why, what we are getting from this. So what type of equation is this? It's like, what is the order of this equation? This is zero order है सर. no, it's not zero order, it's second order equation. S square power of s. सर वो तो हम वो I'm not saying listen, I'm not saying it's a second order differential equation. अच्छा, आप उसका ऑर्डर पूछ रहे हो? ठीक No, है. I'm just asking the order of this equation, algebraic equation that you have. Okay, so the highest power of s is 2, so the order of this equation is 2, second order. Okay, so because s is like a variable here. Okay, s is the variable, like आप solve करते हैं ना quadratic equation. Yes sir. It's like a quadratic equation. s को आप x मान लो एक तरह से. आपको अगर s अभी नहीं पता क्या होता है. नहीं सर, मुझे लगा आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं. So I hope this is clear to everyone that how we have got this equation. Okay, so we have this second order equation. Sorry, अब इस second order equation के कितने solution होंगे? 2, right? So when I solve this for s,
I'll get two values of S. Yes, sir. Yes, sir. Can all of you find those two values of S? Yes, sir. निकालो एक बार सॉल्व करो S Yes, की sir. वैल्यू फाइंड करो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ये तो आप करते हो स्कूल टाइम से Attendance, please. Akansha. Present, sir. Okay. Abhiram. Abhiram. Abhishek. Present, sir. Adhiraj. Present, sir. Akshat. Present, sir. Aman. Aman Kumar Gupta. Absent. Aniket. Aniket. Absent. Anurag. Present, sir. Anurag Soni. Okay. Ayush. Present, sir. Ayush Shukla. Present, sir. Bhatosh. Present, sir. Chikati. Present, sir. Tejasvi. Present, sir. Chinmay. Present, sir. Neol. Present, sir. Deepak. Present, sir. Okay. Drumil. Damani. Present, sir. Ekanshi. Present, sir. Ekanshi.